आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों असल में अब मेरा मिशन यही है कि ना पाकिस्तान के किसी बंदे की वीडियो लाएं, ना ही कोई इंडियन की। कोशिश करें जो न्यूट्रल मीडिया उसने ये जारी बात है उन्होंने भी कवर किया होगा, उन्होंने वीडियो बनाई होगी कि किस कंट्री का डिफेंस सिस्टम अच्छा रहा, किस कंट्री का डिफेंस सिस्टम कैसा रहा। ये डिफेंस सिस्टम पर है। S400 मिसाइल इंडिया, HQ9 पाकिस्तान, इंडिया, HQ9 पाकिस्तान एयर डिफेंस, इनका जो कंपेरिजन वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। मुझे नहीं पता किसको ये ज़्यादा नंबरिंग देता है, ये न्यूट्रल मीडिया, किसको ये कम नंबरिंग देता है। वीडियो देखते हैं। India and Pakistan have been bombarded by both sides with loitering ammunitions. India operates the Russian-made S400 air defense system, while Pakistan has acquired the HQ9 from China. They're quite similar, as the HQ9 was a reverse-engineered by China based on the Russian S300 missile defense system. We'll also explore the role of the S400, which is designed to counter high-speed, high-altitude threats, such as jets and ballistic missiles, while the shorter-range Akash system is intended for engaging low-flying, slower-moving targets like helicopters and drones. More details all in the video ahead. Following Operation Sindoor, Pakistan reportedly deployed swarm drone tactics in a strike targeting an Indian military installation. The assault extended beyond a single site, with key military installations in several strategic cities coming under attack, including Awantipora, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Ludhiana, and even as far as Bhuj. Pakistani forces orchestrated a coordinated, multi-wave offensive that involved both drones and missiles, marking a significant escalation in cross-border hostilities. In response to the growing aerial threat, India activated its advanced Russian-made S400 missile defense system, which is specifically designed to intercept high-speed, long-range missiles. Complementing this was the deployment of India's indigenous Akash missile system, engineered to effectively target slower-moving threats such as loitering munitions and drones. These two systems worked in tandem, creating a layered defense network capable of responding to a wide range of aerial threats. While the S400 is tailored to neutralize larger and faster ballistic or cruise missiles, the Akash system serves a critical role in countering lower-speed targets, including swarming drones and low-altitude ammunition. Together, they underscore India's strategic focus on maintaining versatile air defense capabilities amid an increasingly complex threat environment. Akash is a supersonic missile capable of flying at speeds up to Mach 2.5. That's more than 2.5 times the speed of sound. With a range of 25 to 30 kilometers, it can engage targets long before they pose a threat. Pakistan, on the other hand, uses the Chinese-made HQ9, which is essentially a reverse-engineered version of the Russian S300, not the S400 as sometimes mistakenly stated. Let's take a look at the primary differences between the two systems. The S400 features an impressive tracking range of 600 kilometers, approximately 370 miles, and an engagement range of 400 kilometers, which translates to around 250 miles. In comparison, the HQ9 has a tracking range of 250 kilometers, about 155 miles, and an engagement range of 120 kilometers. This is roughly around 75 miles. As mentioned earlier, the S400 and the HQ9 come from a similar lineage. So let's take a general look at how these systems work. A typical S400 system is made up of 6 main parts: the missile launch vehicle, a mobile command and control post, the long-range surveillance radar known as Big Bird, the engagement and fire control radar called Gravestone, an all-altitude acquisition radar, and a mobile mast system. Each component plays a vital role in the overall functionality of the system. Let's take a closer look at each of these elements. The missile itself is, of course, central to the system. The launch vehicle that carries these missiles is typically the Baz tractor truck. These TEL vehicles house up to 4 launch tubes, which can carry a variety of missile types designed for different ranges and target profiles. There are 4 primary types of missiles in the S400 system. First, a short-range missile with a reach of around 40 kilometers. Second, a medium-range missile capable of hitting targets up to 120 kilometers away.
Third, a long-range missile that can strike at distances of approximately 250 kilometers. Finally, the very long-range missile, which can engage threats up to 400 kilometers away. These missiles allow the S400 to create a flexible and layered defense envelope. Now let's move on to the radar systems, which are key to the S400's advanced targeting and tracking capabilities. The first and most prominent radar is the 91N6E Big Bird, NATO reporting name Tombstone. This acquisition and battle management radar is mounted on an 8x8 trailer. It can detect and track a wide range of aerial targets, including aircraft, rotorcraft, cruise missiles, ballistic missiles, and drones, up to a distance of 600 kilometers. It can simultaneously track up to 300 targets, making it one of the most advanced mobile radars in the world. Next is the Fire Control and Target Tracking Radar, also known as Gravestone. This multifunctional radar has a range of about 400 kilometers and is responsible for guiding missiles to their targets. It is sometimes referred to as an all-altitude detector due to its ability to track threats at various elevations. There is also the 40V6 sensor unit, which is used to detect low-flying targets that try to evade detection by using terrain masking. Some experts argue that the 40V6 is not a radar itself, but rather an optional mast tower that can elevate radar units for better line-of-sight coverage. Either way, it enhances the system's ability to detect threats flying close to the ground. The entire operation is managed from a mobile command and control post, typically mounted on a truck. From here, operators control the entire engagement sequence, from initial detection to the final missile launch. Let's walk through the basic step-by-step process of how the S400 system operates in a combat scenario. At the first step, the Big Bird long-range surveillance radar detects incoming targets. As mentioned, it can track up to 300 targets simultaneously. This information is relayed to the command and control center. At this stage, the system determines whether the target is hostile or friendly. Once a threat is confirmed, the command center decides whether to engage and, if needed, receives authorization from higher command. Once engagement is authorized, the command post instructs the launchers to fire the appropriate missile. The type of missile used depends on the range and nature of the target. Notably, the system typically launches 2 missiles per target to maximize the chance of a successful hit, one primary and one backup. The missiles are guided to the target using the engagement radar. This radar works in real time with the surveillance radar, continuously updating the missile's trajectory based on the target's movements. At step 5, for low-flying threats, such as cruise missiles or drones trying to avoid detection, the mobile mast system comes into play. It can detect these targets even when they're flying under radar coverage and allows the command post to initiate a missile launch, with mid-range interceptors to neutralize them. In terms of capacity, the S400 system can track up to 300 targets at once, engage 60 to 80 of them simultaneously, and guide up to 160 missiles in flight. Considering it usually launches 2 missiles per target, this capacity makes it highly effective in high-intensity combat environments. Of course, no system is without limitations. While the S400 is formidable, especially against poorly coordinated or unprepared attacks, its effectiveness is still influenced by the weapons mix deployed alongside it. One key limitation is the curvature of the Earth, which restricts radar line of sight and can create blind spots, especially for low-flying objects. This means cruise missiles or aircraft flying close to the ground might not be detected until they're dangerously close, sometimes as little as 40 kilometers away. Despite these drawbacks, the S400 remains one of the most advanced and versatile air defense systems in the world. We also make original engineering content, so please subscribe and hit the notification bell for more videos. तो जी दोस्तों, वीडियो की ख़त्म। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मतलब कि जो जानकारी हमें नहीं मिलती ना, इस भाई की वीडियो से पता चल जाता है। अब ये वर्किंग थी S400 की टोटल, उसने समझाया था। तो और कंपैरिजन था HQ9 की वर्किंग नहीं दिखाई उसने, लेकिन कंपैरिजन जब किया था ना, तो जो HQ9 यूँ ही कह लें कि जैसे S400 बाप है और HQ9 बेटा है, बेटा बनी पोता है। सच कहा कि
कि S400 की रेंज डिटेक्ट करने की 600 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है, 600 किलोमीटर। और अंगेज कहाँ करता है, 400 किलोमीटर दूर से अंगेज कर लेता हूँ तो मार के जाता है। और 300 टारगेट इकट्ठे डिटेक्ट कर सकता है, और उनमें से 80 टारगेट एट अ टाइम गिराने की ताकत रखता है। 80 टारगेट 300 में से सिर्फ एक S400। तो उसके बरक्स जो HQ9 था, उसकी रेंज थी मेरे ख्याल में जो 200 किलोमीटर थी डिटेक्ट करने की, एंगेज करने की जो थी वो मेरे ख्याल में 100 थी, 100 से भी कम थी। उसके टारगेट्स नहीं बताया कितने टारगेट्स वो एंगेज कर सकता है। तो टोटली हम देखा इस पूरे सिनेरियो में, इस जंग के माहौल में टोटली HQ9 फेल हुआ है। उसकी बड़ी वजह इंडिया का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, हैमर, स्कैल्पर है। और इनके जो थे ना S400 के साथ था आकाश, चार मेरे ख्याल में मेन बताएं, आकाश था, S400 था, एक और था, चार बताएं मुझे भूल गया, क्या इसमें बताया, 4 लेयर्स हैं इंडिया की। जो आकाश बताया वो है थोड़े मतलब जो बुराक, एक बुराक था, एक आकाश था, एक और भी है भूल गया। आकाश है 50 से 60 किलोमीटर की रेंज है, मतलब कि कोई भी चीज़ अब हिट करना बड़ा मुश्किल है। आकाश ज़्यादातर वो बता रहा था कि जो स्लो मूविंग जब्स हैं जिसमें जो स्लो ड्रोन है और हेलीकॉप्टर है, उसके लिए आकाश बेसिकली है। उसकी रेंज भी थोड़ी कम है, यानी कि 40-50 किलोमीटर 80 किलोमीटर यहाँ तक है। यानी कि हमारा HQ9 जो कि S300 का जो है ना रिवर्स इंजन, और पाकिस्तान का जो HQ9 है ना, अगर उसके कंपैरिजन किया जाए वो तो आकाश के बराबर का है। तो ये हमने देखा भी है कि उसने ब्रह्मोस तो रोका को नहीं, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी। आकाश भी स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट को, मतलब जिसमें हेलीकॉप्टर नज़दीक की चीज़ें, सेम इस तरीके से हमारा HQ9 है। हालांकि वो कॉपी है S300 की, सही कॉपी भी नहीं करना आता चाइना को। मतलब कि ये टोटली अपर हैंड है इंडिया का ऊपर। और देखा भी जो पाकिस्तानी नहीं पढ़ते लिखते, जो नहीं वीडियो देखते, वो तो कहेंगे कि हमने जो कर, क्योंकि वो तो वही चूसेंगे जो हमारी आर्मी और हमारे एंकर चुसाएंगे। उनको ये नहीं पता कि ये काम कैसे करते हैं, क्या पाकिस्तान ने कितना डैमेज किया है, इंडिया ने कितना डैमेज किया है, इंडिया का सिस्टम कैसे काम करता है, पाकिस्तान का सिस्टम कैसे काम करता है, इंडिया का सिस्टम कौन सा है, पाकिस्तान का कापी है कसल है। ये चीज़ें जब तक नहीं पढ़ेंगे, वो सही कहते हैं पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है यार। आप हमारे मुल्क की जनता के बारे में क्या नॉलेज रखते हो, उनको तो पता ही नहीं है। वो एक भाई था, वो बोल रहा था कि भाई पबजी जो है वो हमारे मुल्क में बैन हो गई है, तो इसका हमारी मैशत पे क्या असर पड़ेगा। उसने कहा कि हम तो रुल जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, हमारी तो पहले ही इंडस्ट्री नहीं है। लोगों को ये भी नहीं पता कि पबजी क्या होती है। किसी ने कहा भाई हम रक्षे को आग लगा देंगे, खुद को आग लगा देंगे, एहतजाज करेंगे, हम पबजी के बगैर रह नहीं सकते, हमारा हाल ही नहीं है। ये हालत है हमारी आवाम की। एक एंकर ने पूछा कि मियां खलीफा कौन है, तो वो एक बुजुर्ग था, तो वो कह रहा था ये तो पीर साहब हैं। बहुत बड़े पीर साहब। ये नहीं कि पता कोई नहीं है, जवाब हाजिर दिमागी से दे देते हैं, लेकिन हकीकत का नहीं पता कि हकीकत क्या है। बाकी जवाब हाजिर दिमागी से झूठ वही ना जो ज़हन में आया बोल दिया, पता नहीं उसके पे सर्च नहीं की, तहकीक नहीं की कि वो पीर ही है। अच्छा, उसका नाम भी इस तरह ही है, आम बंदे को समझ नहीं लगता। बड्डे शाह। हाँ यार कमाल क्या। अच्छा, इसकी तकरीबन इस भाई ने तो ये है कि सोचा ये था, कंपैरिजन कर रहा था तो HQ9 के बारे में तफसील से बताया अलग उसकी रेंज बताई है 150 से 250 किलोमीटर बस रेंज बताई है, बाकी उसका कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ एक रेंज बताई है। तो रही तो वैसे S400 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है, और शर्म आनी चाहिए हमारी जो फोर्सेस को या हमारे इदारे सिक्योरिटी इदारों को कि सिर्फ थोड़ी सी 200-250 किलोमीटर की रेंज वाला हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है। नकारा, मैं तो कहता हूँ ये तो एक किस्म का नकारा सिस्टम है। उनके पास एक अच्छा, अगर इंडिया से आप एंगेज हो रहे हो तो आपके पास उनके इदारे का
एयर डिफेंस सिस्टम भी होना चाहिए कम से कम। चले बाकी तो आपके पास कुछ ना कुछ कैपेबल। यार ये बात तो आप एक साइड पे रख दो कि आपका डिफेंस सिस्टम नकारा है, मैं तो कहता हूँ कि आपके हुक्मरान भी नकारा है। चले वो ये बात भी नहीं मानते कि हम हारे हैं, वो तो बाकायदा मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और उनको भाई गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वो गिफ्ट दिए जा रहे हैं जो तस्वीरों की शक्ल में कि जो चाइना है ना उसने अपनी मशकें की है ना, उस दौरान जो भी उन्होंने मिसाइल वगैरह या जो भी उन्होंने जो अपना असला वगैरह चेक किया तो उसकी तस्वीरें ला कर दे रहे हैं। रात को हमने वीडियो की थी लोग सर की, तो वो भी यही कह रहे थे कि भाई आप जो है कम अज कम जो अपना आपने अलफता चलाया है, अपना फतह मिसाइल जो चलाया है, तो उसकी आप पिक्चर जो है इसको दे देते। ये भी हो सकता था कोई और आपने जो अटैक किया है इंडिया की तरफ उसकी पिक्चर आप उसको शेयर कर सकते थे। तो ये अब पूरी दुनिया में जाकर ऐसाई हो रही है आपकी, थू हो रही है, ये हालत है। आप कहते हैं कि डिफेंस सिस्टम हमारा कमजोर है, मैं तो कहता हूँ इनके दिमाग ही कमजोर है। ये दिमागी लिहाज से ही बहुत गिरे हुए हैं, जिनको ये नहीं, जो अपनी हार नहीं तस्लीम करते बल्कि हार की भी खुशी मना रहे हैं। लौरी है ना डीएन, तो ये लौरी है। शबाश शुक्र कौन है? लौर की है, लौरिया की आदत है। जो नीचे बड़े हुए भी शेर होते कोई गांड भी मार रहा है ना तो वो कहते हैं हम तो भाई हमने तो मार का मार दिया, हम तो जीत गए भाई, जीत गए। ये हकीकत बात है, ये जिन्हें तो बड़ी चीज़ है। ये जिस इलाके का बंदा होता है ना उसका असर होता है उस पर, जहाँ भी चला जाए, ये हकीकत है। आप बलोच पठान को भेज दे बैरून मुल्क, उसकी सोच कहीं ना कहीं उसकी जो तरबियत है ना वो वहाँ भी दिखती रहेगी। बाकी एक बात है भाई कि उनका डिफेंस सिस्टम जो है ना इंडिया का वो हमसे लाख दर्जे तगड़ा है और उनके बरामूज जो है वो भी बहुत घातक है और उन्होंने साबित भी कर दिया है इस युद्ध में। ऐसा ही अच्छी थी वीडियो, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और हमें हमारी कमजोरियाँ पता चल रही, यह भी बड़ी बात है कि हमें कोई कमजोरियाँ हमारी बता रहा है। वो इंडिया का नहीं बल्कि किसी और कंट्री का बंदा। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, टेक केयर।